Hi everyone, hope you all are doing well and doing safe. Welcome back to my channel or welcome if you're new here. My name is Dipanita. In today's video, I will be sharing with you guys this gorgeous glam makeup look, and I am so in love with this look that I couldn't resist myself from sharing it with you guys. Now, if you're planning to do your self-reception engagement makeup look, then I think this is the perfect look that you can go for. Or else you're looking for a gorgeous wedding guest makeup tutorial, then I think that this video will help you. Now, without any more blabbering, let's get started with today's video. Let's go. It's really important to start with a good base, and for that all you have to do is you have to follow your skincare routine thoroughly. Now, I have washed my face, applied my toner, and right now I'm using a good moisturizer. Moving on to our primer, I'm using Revolution Pro Radiant Peach Primer. It has that orange tint in it, so it will cancel out all the darkness that I have on my face. I'm just applying the product on dotting motion and then I'm blending it out. As you guys can see that it's leaving a white cast, but it's not an issue because foundation apply करने के बाद वो visible नहीं होती है. You don't have to apply the exact same products I'm using in the video. Just apply whatever you have or whatever you prefer. That's all. After that, for the foundation, I'm using Huda Beauty 4 Filter Foundation in the shade Dulce de Lace. Now, this particular shade is a little bit light on my skin, but this foundation oxidizes a lot. So, after I think 10 minutes, जो foundation है वो मेरी exact skin tone match हो जाती है. So, that's why मैंने एक shade light ही purchase की थी. Now, I'm using a damn beauty blender to blend out the product because particularly for this foundation, I don't prefer using makeup brushes because इसकी consistency बहुत ज़्यादा thick है. So I enjoy using a beauty blender, so that's what I'm doing right now. And don't forget to apply the foundation on your neck as well as on your ears, because these are the two parts that we tend to forget and these are equally important. For the concealer, I'm using PAC Spotlight Concealer in the shade Nutcracker, and I will be using it under my eyes, bridge of the nose, cupid's bow, chin, forehead, just to highlight those areas, and I will be using that same concealer as my eyeshadow base. Now, the consistency of this product is really thick but creamy, तो blending के टाइम पे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी. बोथ कंसीलर ब्रश एंड ब्यूटी ब्लेंडर दोनों से इवनली ब्लेंड हो जाती है. तो मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट अप्लाई की है बिकॉज अगेन इसकी कवरेज फुल कवरेज है, सो यू डोंट रियली नीड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट. मेक श्योर देयर इज नो क्रीज लाइन बिफोर अप्लाइंग कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर. अगर आप क्रीज लाइन के ऊपर ही कॉम्पैक्ट पाउडर या तो लूज पाउडर अप्लाई करते हो ना, देन आपकी क्रीज लाइन और भी ज़्यादा एग्जैजुरेट हो जाएगी, वो विजिबल हो जाएगी, एंड दैट्स नॉट समथिंग वी वांट, राइट. सो मेक श्योर आपने आपकी कंसीलर एंड फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर ली है एंड देन अप्लाई योर कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर. सो हियर आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी लूज पाउडर टू सेट माई अंडर आइज बिकॉज मेरी अंडर आइज बहुत ज़्यादा क्रीज होती है. तो मैं क्या करूँगी, मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर पे हल्का सा प्रोडक्ट लेके उसको मेरी फेस पे प्रेस करते हुए अप्लाई करूँगी. एंड ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी मेथड है ना जो कि मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है एंड मेरी अंडर आई क्रीजिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है. For bronzing, I'm using the Balm Cosmetics Desert Bronzer, and I'm applying the product in circular motion and blending it out. I don't really want that sharp bronzing or sharp contouring, so I'm just applying the product very randomly. We do bronzing just to add some shadows to our face because after applying foundation, हम लोगों की face ना बहुत ज़्यादा वो blank दिखने लगती है, बहुत flat दिखने लगती है. So just to add some shadows to our face, we do bronzing, then highlighting, blush, and all of those things. So I'm applying that product on my nose as well because I have really sharp nose. Just to make it more sharp, I'm bronzing my nose, then forehead, jawline, cheekbones, and all of those areas. For the blush, I will be using Color Bar Matte Illusion Blush in the shade 003. For your convenience, मैंने हर एक product की shade name and price screen पे mention कर दिया because sometimes मैं बोलना भूल जाती हूँ ना. So yeah, and this blush is super pigmented and great for Indian skin tone, particularly this color. Okay. For highlighter, I will be using Nykaa Glow Getter Highlighter in the shade 02 Glitterati. Now I will be mixing both the shades and then I will apply it. अगर मैं सिंगल शेड्स अप्लाई करती हूँ ना, देन समवेयर जो कलर्स है वो मेरी स्किन टोन के साथ नहीं जाती है. सो आई लाइक टू मिक्स बोथ द शेड्स एंड जो आउटकम आती है ना, वो शेड मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है. सो आई एम जस्ट डूइंग दैट एंड यू गाइस कैन सी द ग्लो, राइट. बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल हाईलाइटर है, इवनली ब्लेंड हो जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. Moving on to our eye makeup, I'm using LA Girl Pro Eyeshadow Palette in the shade Artistry, and first I will be taking this beige kind of a color and I will put it on all over my eyelid as an eyeshadow base because आप जब भी कोई भी लाइट शेड के ऊपर आपकी eyeshadow कलर्स अप्लाई करोगे ना, आपके eyeshadow कलर्स और भी ज़्यादा पॉप अप होगी. सेम शेड को मैं मेरे लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी.
नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग दिस ऑरेंज कलर एंड आई विल पुट इट ऑन माई क्रीज लाइन. बहुत ही रैंडमली अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज आफ्टर दैट वी विल ब्लेंड आउट द एजेस. So you don't have to apply the product precisely and don't apply too much. Try to build the coverage little by little. Though this palette is super pigmented, you don't really have to, build the coverage. Okay. Next, I will be taking a small blending brush and I will blend out the edges of that orange color. आप लोगों को सेम पैलेट यूज़ करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है. आप और कोई भी आई शेडो पैलेट की सेम शेड्स यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग अ जेली आई शेडो. नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन, मैं इसको मेरी आईलिड के मिडिल पार्ट पे डैबिंग मोशन में पहले अप्लाई करूँगी. बहुत ही कम क्वांटिटी में आप लोगों को प्रोडक्ट अप्लाई करनी है, एक ही बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई मत कर लेना, ठीक है. एंड आफ्टर दैट आई विल स्प्रेड इट ऑन ऑल ओवर माई आईलिड. रिमेंबर डोंट गो अबव योर क्रीज लाइन. आपको इसको आपकी क्रीज लाइन के अंदर ही स्प्रेड करनी है एंड रैंडमली कर लो बिकॉज बाद में आप उसको ब्लेंड कर सकते हो एजेस को. After that, I will take a dark brown shade on a small blending brush and I will put it on my crease line. Now, while applying the color, I will blend out the edges. Like you guys can see, jelly eyeshadow की एक line create हो गई है मेरी crease line पे, तो मैं उसको भी blend कर लूँगी. Eyeshadow application is all about blending, so take your time and blend all the colors properly. Then I will take a big fluffy eyeshadow brush and I will blend all the colors properly. At this point, if you wish, you can take any light eyeshadow color and then blend the colors, or you can blend the colors as it is. Next, मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे जो डार्क ब्राउन शेड मैंने क्रीज लाइन पे अप्लाई की थी, सेम शेड को मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी. ऑल्सो आई हैव अप्लाइड वाइट आई पेंसिल ऑन माई वाटर लाइन. आई थिंक मैंने निक्स की वाइट आई पेंसिल यूज़ की थी, तो मैं अच्छे से जो डार्क ब्राउन शेड है उसको अप्लाई कर लूँगी एंड देन मैं ऑरेंज शेड को अप्लाई कर लूँगी. लाइक फर्स्ट जो ऑरेंज शेड मैंने अप्लाई की थी, सेम ऑरेंज शेड को मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी. And to intensify my lower lash line, I will be using black eyeshadow. Now, black eyeshadow application can be tricky. So, अगर आप black eyeshadow यूज़ नहीं करना चाहते हो, then black eyeshadow के साथ थोड़ा सा brown eyeshadow मिक्स करके then अप्लाई कर सकते हो पहले. And then मैं इसको एक flat eyeshadow brush लेके blend कर लूँगी. इससे eyes बहुत ज़्यादा fresh दिखती है, bright दिखती है. Okay. For the eyeliner I'm using Swiss Beauty 2-in-1 eyebrow and eyeliner. It's a gel eyeliner. At first I was not sure कि मैं eyeliner अप्लाई करूँगी कि नहीं, but then I ended up applying eyeliner. But बहुत ही basic eyeliner मैंने ड्रॉ की है, winged कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, simply बस eyeliner ड्रॉ की है. That's what you have to do as well. For the mascara I am using Sugar Lash Mauve Limitless Mascara. You have to coat your lashes well because if you are planning to wear falsies, then you have to coat your lashes ताकि आपकी नेचुरल लैशेस फॉल्स आई लैशेस के साथ वो मिक्स हो पाए. For the lipstick, I have used Mamaearth Naturally Matte Lip Serum in the shade 01. This shade is by far my favorite shade and please prepare yourself to see me using this particular shade in a lot of my videos. Okay, I'm not even kidding. बहुत ही पसंद आई है मुझे ये वाली शेड. Anyways, for the false eyelashes, I have used Hina Henna Beauty lashes. These lashes are quite dramatic, but I think it's going really well with the overall look, isn't it? I'm just applying the lashes with my fingers and then I will press it using the backside of a brush. Previously, I used to use those lash applicators, but trust me, once you start using those, बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी. Without that tool, आप लोग ना false eyelashes अप्लाई नहीं कर पाओगे. So I have stopped using that. And with that we completed today's video. I really hope you guys find this one helpful. If you did, then you know what you have to do. Just like this video and share it with your friends and family. If you wish, you can subscribe to my channel if you haven't already. See you guys soon. Bye and take care.